हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आई हैव बीन प्लानिंग फॉर दिस वीडियो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो टुडे इज द डे आई फिल्म इट. Basically, I am going to be showing you all some things that I am definitely carrying with me to 2026. Now you guys know I make fashion and beauty videos, so I do have a lot of things that I will be carrying, but these are the ones that I wanted to recommend you all. And there are more, but then I'll think about it. Like if you guys will enjoy this video, तो आप लोग comment में बता देना ताकि I will make more of these. So yeah, these are not the only things, but these are some of the things. I hope you guys are getting it. And I am going to be showing you all mix of everything in this video, like except for beauty. Yeah, beauty के लिए I'm planning another video. So in this video, I am going to be showing you all some clothes, some jewelry, some bags, some footwears, and yeah, that's it. So without any further ado, let's get started. Now I'm sure you guys are going to ask me about the sweater that I'm wearing, so I will link this in my pinned comment section. You guys can go and check it out. I actually wanted this for a brand shoot, but I liked it so much कि मैंने ये return किया ही नहीं है. Also, I got a lot of compliment from you guys जब मैंने ये Insta story में डाला था. So I'm definitely keeping this. But if you guys are getting this ना, then keep this in your mind that you have to get a size bigger. मैंने पहले M लिया था, but मेरे को M इतना अच्छे से fit नहीं हो रहा था. It was literally tight, so I got it in XL. But I think मेरे को double XL लेना चाहिए था. But it's okay guys, क्योंकि ना ये मेरे को fit हो रहे. But if you like oversize, then go for double XL. I think that will fit you perfectly. Now without any further ado, let's get started. And if you guys want the link for my earring, then you guys can go and check out the jewelry haul that I did recently. You guys are going to love that. Now let's get started, and I am going to start with the clothes. And here is the thermal which I have been loving so much. I got it from Amazon and I got it in the month of January. I've been wearing this a lot. और मैं recently trip में गई थी. I went to Dharamshala. It was snowing there, but this kept me really warm and it is in such a good quality. This is only for 499 rupees, and look at the quality guys. It's so stretchable and it's so soft, and thermal should be touching your skin, you know, so you can go for small size, but I went with M size, but also it kept me really warm and I really like this one. I feel like ये अपना ऐसे जिम में भी पहन सकते हैं क्योंकि I am going to wear it like that only, जिम या पिलाटेस ऐसा. It's very soft guys. I would highly recommend you all. I don't know कि आपको good thermal ऐसा 499 में मिलेगा या नहीं, but this is so good. और अभी समर भी आ रहे हैं तो आपको thermal का इतना जरूरत नहीं होगा, but you will be needing something, you know, जिससे आप ऐसा पहन के लेयर कर सके. So you can go for this. It is so good. You guys are going to love it. The next one has to be this cardigan. It is so versatile क्योंकि it's black in color and the quality is so good. This one I got it in size XL and this was only for 800 something, which I feel like it's a very good price for this cardigan क्योंकि the quality is so good and it's black in color, so it's plus point. Okay, but इसमें ना और भी बहुत ज़्यादा colors available है, but I would recommend you all to go for like basic colors because you know basic colors अगर आप लोगे तो बहुत टाइम तक चलोगे. जैसे आई एम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, तो आई गेट अ लॉट ऑफ क्लोथ्स फॉर फ्री ऑल्सो, है ना, तो आई गेट कलरफुल आइटम्स. बट अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता तो मैं थोड़ा बहुत बेसिक कलर लेता ताकि मैं और रिपीट कर पाता. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल गाइज, सो इट इज रियली नाइस. आई विल टैग इट फॉर यू ऑल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, इट इज गोइंग टू बी शूज, एंड आई हैव 3 shoes in total to show you all. Let me go with the first one. This is the one that I got recently and I am obsessed guys, and it looks like this. आप लोगों ने मेरे को देखा होगा ये पहनते हुए, मैंने दिखाया है आप लोगों को YouTube शॉर्ट्स में भी, इंस्टा रील्स में भी, स्टोरीज में भी. सो दिस इज द शू. इट्स फ्रॉम द ब्रांड कैंपस. आई रियली लव दिस ब्रांड. मैंने ये पहले भी कहा था. मेरे पास ना कैंपस का और एक शू है जो मैंने इतना रगड़ दिया और वो फट गया है. दैट्स द रीजन आई गॉट अनदर वन. और रिसेंटली ना हमारा ऐसा ट्रैक जाने का प्लान था. दैट्स द रीजन आई गॉट दिस वन. एंड इसमें और भी 2 कलर्स अवेलेबल है. वन इज इन ब्लैक कलर एंड वन इज इन ब्लू कलर. सो यू गाइस कैन गो एंड check out both the colors क्योंकि it's really great, and ये कलर भी अवेलेबल है of course. It's so pretty guys and it is so soft. और ना रिसेंटली मैंने ट्रिप में ये पहन के इतना चला उसके बाद भी मेरा पाँव दर्द नहीं किया है. So Campus is the brand you can trust. They have really good collection and their color detailing, everything is so good, so definitely go and check this out. I can't believe that I paid only 1200 something for this shoe क्योंकि आजकल के टाइम में जूता इतना सस्ता नहीं मिलता है. And I'm also someone जो ना थोड़ा जूता expensive पसंद करते हैं, but I do trust the brand Campus. That's the reason I keep purchasing from them. So you guys can go and check it out. I wear UK 3.5, but I think they don't sell 3.5 UK, so I got it in UK 4 and it fits me perfectly. Love this guys. So ये तो हो गया for work
walk and run, but now let me show you all a flat that I have been wearing a lot. आप लोग मेरा get ready with me ये सब देखते तो आप लोगों को पता ही होगा कि how obsessed I am with this flat. जब मैंने ये फर्स्ट टाइम लिया था तब मैंने कहा था कि आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ दिस क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव एंड थोड़ा बहुत यहाँ हर्ट करते हैं, बट यू नो व्हाट गाइस, ओवर द टाइम ये ना थोड़ा खुल गया है. नाउ इट इज सो कंफर्टेबल एंड आई वेयर दिस ऑलमोस्ट एवरी डे. जब भी ना मेरा इतना ड्रेसअप करने का मन नहीं करते बट आई वॉन्ट टू पुट थोड़ा सा एफर्ट ना मेरा आउटफिट में, तब मैं ये पहनती हूँ एंड ट्रस्ट मी, I love it. On the days when I don't want to wear heels but I want to feel thoda sa put together, this is the one I look forward to, and it is so good guys. I love this. Look at the detailing and also this boxy wala, you know, it's really nice guys. Moving on to my next one, again it is going to be a footwear and this is a heel. So on the days I'm feeling very dressy, this is the heel that I wear and you guys have seen me wearing this a lot. मैंने ये लिया था 2 साल पहले and I have been loving this. पहले जब मैंने ना बहुत पहले जब मैंने पहाड़ों में पहना था, तब पहाड़ों मतलब माउंटेन में जब पहना था तब मेरा ऐसा बहुत शू बाइट हो गया था क्योंकि I wasn't wearing socks और मेरे को बहुत शू बाइट हुआ था. So मैंने आप लोगों को कहा था कि I'm not really happy with this shoe, but now I love it and winter में तो I wear it with socks only, so no shoe bite and I can literally run in these guys. So अगर मैं सफदरजंग भी जाती हूँ तो जो लोग सफदरजंग जाता है उन लोगों को पता ही है कि पूरा ऐसा बम्पी रोड्स है, you know, पूरा पत्थर वत्थर, वहाँ भी I wear this and go and I can literally run in these guys, so it's really great. पहले I was regretting so much getting this, you know, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं पहन रही थी, but this winter I've been wearing this a lot. और मैंने ये ना घर में छोड़ दिया था तो recently when I went to home ना तो मैंने लेके आ गया वापस से. So this is something I've been wearing a lot guys. I've been loving this. I feel like heels are one time purchase, so you can get it in a good brand, so it will last you for like 4 to 5 years क्योंकि I've been wearing this heel for 2 years now and it's amazing. अभी तक कुछ भी टूटा फटा कुछ भी नहीं है और इसका हील भी परफेक्ट है गाइस, इतना भी छोटा नहीं है इतना भी बड़ा नहीं है. Now moving on to my next section, it is going to be bags and I have 3 bags in total to show you all. I'm going to go with my favorite one. It is a backpack and बहुत लोगों ने guess किया होगा, yes it's this one. मैंने ये recently दिखाया था आप लोगों को मेरा YouTube shorts and also on Instagram. This is the one that I have been obsessed with and it is from the brand Daily Object, one of my favorite brand guys. मेरे को ना ये brand सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. The detailing of this bag is so good guys and let me also show you all the compartment. Here you have the first compartment and you have here where you can put your iPad, laptop and then more compartments. It's so good guys. This has to be my फेवरेट रिसेंट परचेज. मैं ना रिसेंटली ट्रिप गई थी तब मैंने ये लिया था बिकॉज आई एम समवन जो अपना बैग में सब कुछ कैरी करते हैं, सो आई वॉन्टेड टू पुट माई DSLR, माई ट्राईपॉड, माई iPad, एवरीथिंग. दैट्स द रीजन आई गॉट दिस ह्यूज बैग एंड आई हैव अनदर बैकपैक एज वेल जो मेरे को वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है. इट्स फ्रॉम द ब्रांड Lino Peros, but I got this just for the size and of course color. But I know not everyone is into backpacks, so I have 2 shoulder bag to show you all. This is the first one. If you're looking for something expensive and you know something like ऐसा branding के लिए देख रहे हो, then this is really good. It's from the brand Mirajo and this is the space that you will get and this is the shoulder strap. इसमें ना और एक ऐसा strap आता है जो मैंने कहाँ रख दिया मेरे को याद नहीं है because I don't use it only. ये मेरे साथ ना 2-3 साल से है and I still carry it a lot क्योंकि ये बहुत basic color में है, like brown हो गया, beige हो गया, so it goes well with all my outfit. But I have seen people carrying this a lot. Okay, so if you want थोड़ा सा different but affordable, then you can go for this one. This is from the brand Lino Peros. Quality बहुत ज़्यादा सही है. So yeah, I like this brand and this is a shoulder bag. I love the size also. You can fit here so many stuff. It's in really good quality. यहाँ पूरा ऐसा brand का नाम लिखा है और इसमें ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है गाइस. जब मैंने ये लिया था ना तब इसमें ग्रीन एंड ये सिर्फ अवेलेबल था, बट नाउ देयर्स ब्लैक कलर, देयर्स कॉफी कलर. ओ माय गॉड, कॉफी कलर इज सो प्रिटी गाइस. जस्ट गो एंड चेक इट आउट. आई एम श्योर यू गाइस आर गोइंग टू लव इट एंड अगर आप क्वालिटी की बात कर रहे हो देन इट्स रियली ग्रेट. सो या, एंड दिस इज हाफ द प्राइस ऑफ दिस वन. तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू गो फॉर दिस क्योंकि it's amazing guys and I love thoda aisa tight bag. So this is tight and the shape is also so pretty, very unique. So yeah, definitely go and check this out. Okay, now moving on to my last section, it is going to be jewelry section. और मैंने recently jewelry haul किया था, so you guys can go and check out that video. But इसमें ना मैं बस अपना favorite दिखाऊंगी. अभी आप लोग मेरे को ना ये सब products दिखाते हुए थक गए होंगे, but let me tell you all,
क्या करूँ guys, these are the things that I wear on my daily basis है ना, so I am going to show you all. क्योंकि मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि गोम why are you showing the same things, ऐसा अगर प्रोडक्ट रिपीट करते हो तो people are like why are you showing the same thing, and if you're showing some new things then they're like why are you over consuming. So I don't know guys, but I'm just going to show you all the one that I keep wearing. So this is the bracelet that I got 1 साल पहले या 2 साल पहले, I don't know guys, but ये bracelet ना काफ़ी टाइम से मेरे पास है and it is in such a good quality. It's anti tarnish, so इसका कलर नहीं जाएगा, and detailing is also so good guys. I love this. This is one bracelet जिसके बिना I won't travel. मैं घर भी गई थी तब मैंने ये लेके गया था, बस पहनने का मौका नहीं मिला, वो अलग बात है. I'm not someone जो ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, so this one is perfect for me. It's a combo and if I want to wear only this तो मैं सिर्फ ये पहनती हूँ, या if I want to wear only this तो मैं ये पहनती हूँ. And if I want to elevate then I just go with watch, and this is the watch that I've been loving. I got this recently only and the color is so good. ये golden वाला was for like 1900 something if I'm not wrong, but इसका जो rose gold वाला है ना that's only for 1500 something, so I'll tag that also for you all, तो आप लोग जाके check out कर सकते हैं. I love everything about this watch guys. इसका जो dial है it's so pretty, इसका जो strap है it's so nice. So this is perfect. This is from the brand Sonata. I've been getting watches just for the style only guys, क्योंकि मैं इतना watch use नहीं करती हूँ. So it's very affordable and this is how it looks. Now moving on to my last one, it is going to be this. It is a sunglass. मैंने ये आप लोगों को पहले भी दिखाया था, but recently I wore this and a lot of you guys were asking कि गोम आपने कहाँ से लिया, जबकि मैंने ये Amazon से लिया था and I got it again last year या last year, I don't remember, but I got it बहुत पहले and it is really cool. ये ऐसा डब्बा में आता है and this is how it looks guys. It's so pretty. ये ऐसा गोल्डन में है, बट देन यू कैन गो फॉर द सिल्वर वन ऑल्सो, क्योंकि अलग अलग कलर में अवेलेबल है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन मी. आई रियली लव इट. मैंने ये रिसेंटली धर्मशाला ट्रिप में लेके गया था, सो अ लॉट ऑफ यू गाइस लाइक्ड इट. लव द क्वालिटी गाइस. ये एक टाइम में इतना फेमस हो गया था, मैंने ये तब लिया था, बट अभी मैं इससे ज़्यादा पहन रही हूँ. It looks so cool guys, looks so chic. So if you are looking for a sunglass then you can go and check out this one. It's really great. और इसके साथ of course एक वो भी आता है कपड़ा, बट मैंने वो गायब कर दिया. So yeah, that is it for this video and I really hope you guys enjoyed it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please don't forget to like, comment, share and subscribe and comment this emoji for this video, ताकि मेरे को पता चले कि आपने ये वीडियो end तक देखा. And I will see you all very soon with my next video. Bye bye, take care.